Screen visible to all. Yes, sir. Thank you. एक मिनट. आर्किटेक्चर जेमे देखबा जोटा केबे तो आसु स्क्रीन आसुची तो पसन मोटे स्क्रीन आसुची ना आपन को भी कंप्लीटली विजिबल अनुप्रिया ना फाइन खाली थरे कहि देले मूव ऑन करबी इज इट कमिंग स्क्रीन एंड ऑडियो दे कोन है ना ऑडियो एफसी एनीवन कुड यू प्लीज कंफर्म मत एक मिनट रुको हाँ बेको हाँ ओके फाइन तो टेंपल आर्किटेक्चर में देख दो टेंपल आर्किटेक्चर राज्य में बेसिक जिनस देखि दो टेंपल आर्किटेक्चर देन वी विल गो टू द ओडिशा पार्ट को आसीबा तो टेंपल आर्किटेक्चर सिंपल जदि तुम देखो डिफरेंट फॉर्म रे क्वेश्चन आसे यदि मेंस रे देखो जदि केबे मेंस अछि टेंपल आर्किटेक्चर डिफरेंट फॉर्म रे क्वेश्चन आसे लाइक ईदर दे विल आस्क यू द सिंपल नगर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर लिखो simple Nagara style of temple architecture. Either they will ask you this one, or they will ask you the Dravidian, or they will ask you the Vesara style. Mute कर दिया समझते हैं. So either they will ask you the simple question एमती आसीगो कि discuss the Nagara style of temple architecture or discuss the feature of Nagara style of temple architecture. or Dravidian or mixed जहाँ को हमें कुछ Vesara style or the mixed style. कल ये दीटा को मिसे दिला पर तुम्हारा Vesara style of temple architecture. Or they will ask you the what Utkal style or the Kalinga style of temple architecture. So this would be the general question. आपको हमें कोई general question. म्यूट जो म्यूट कर दियो जो मानकर स्पीकर ऑन अछि म्यूट कर दियो है ना सो दैट वुड बी ए जनरल क्वेश्चन और दे विल आस्क यू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन और दैट वुड बी ए पर्टिकुलर जेतरो जहा पचारे अछि ऑन म्यूट करी पचारि परिबो है ना और दे विल आस्क यू पर्टिकुलर क्वेश्चन लाइक दे विल आस्क यू के कोणार्क टेंपल लिखो और लिंगराज है ना लिंगराज टेंपल लिखो दैट वुड बी क्वेश्चन जाको हमें कहते पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें कहते either the question would be general question or it would be like a particular question कोणार्क टेंपल लिखो लिंगराज लिखो लेट्स से हमें पूरी कथा कहबा जगन्नाथ टेंपल कथा लिखि परिबो परशुरामेश्वर टेंपल कथा कहि परंत एमती आसीबो ई रेबा हमर केवल आर्किटेक्चर ऊपर बट आजिकली क्वेश्चन एमती बहुत रेयर मिलिबो हमको तो क्वेश्चन केमती आसीबो क्वेश्चन आसीबो के डिस्कस हाउ टेंपल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सही टाइम रो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ को केमती रिफ्लेक्ट करूची सेटो को हमको देखिया पड़िबो तो लाइक दे कैन आल्सो आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और एएसआई समझते जानते एएसआई है ना that is the archaeological survey of India how they are protecting और एएसआई कथा भी तुमको पचारि पारे
है कारण जदियो सिलेबस तुमको एएसआई तो सिलेबस नहीं बट द टेम्पल आर्किटेक्चर जदि हम देखा दैट इज है ना तार रक्षणाबेक्षण किए कर ऑल द कंजर्वेशन एफर्ट इज डन थ्रू द एएसआई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर so that could be they can ask you also ASI and the efforts is being put कौन effort निया जाउची जेमती तमे देखियो कि like जो स्कीम सब अच्छी रही ताको हमें कहि परिबा सो लेट्स बिगिन तो हमें देखिबा टेम्पल आर्किटेक्चर तो टेम्पल आर्किटेक्चर दैट मीन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ हमें कहबा the socio-economic and political life of that particular time जो टेम्पल आर्किटेक्चर हमें इंडियन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर ये ट्रेडिशन बहुत ही पुराना ट्रेडिशन सिंस हमें कहबा गुप्तास बा इवन बिफोर द गुप्तास जदि हमें कहबा सेतरे किछ हेबनी दैट इज द बुद्धिज्म जेबेठु रहिछि सेबेठु ही इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप्स फ्रॉम टाइप तो हिंदू टेम्पल्स रिमेन सेम जदि हमें हिंदू टेम्पल कथा देखिबा हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर यार मेनी स्टाइल अच्छी है ना स्टाइल्स एंड बेसिक नेचर अच्छी जोटा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रीजन टू रीजन वैरी करे दैट मीन्स फ्रॉम टाइम एंड स्पेस वैरी करूची जदि मु कहबी टाइम एंड स्पेस रे कोन करे हमरो वैरी करूची टाइम एंड स्पेस है ना टाइम एंड स्पेस रे कोन करूची वैरी करूची हमरो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर लाइक नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर तार टाइम अनुसार से भी इवॉल्व होची आउ तार स्पेस टू फेस भी हम देखबा वैरी करे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर रे गुजरात रे गोटे प्रकार स्टाइल देखा जो बेंगल रे गोटे प्रकार हिमाचल प्रदेश रे गोटे आसाम रे गोटे एंड गैंगेटिक प्लेन रे गोटे दैट इज द स्पेस और आई वुड से द स्पेशल और आई वुड से द स्पेशल पैटर्न सेटा गोटे डिफरेंट टाइप एंड टाइम टू टाइम भी हमें कहबा चेंज हेची सो टेम्पल आर्किटेक्चर विथ टाइम एंड स्पेस दे हैव इवॉल्वड विथ द टाइम एंड स्पेस है ना एंड तार इवल बट तार जो बेसिक स्ट्रक्चर होची दैट इज रिमेन सेम फॉर द ऑल टेम्पल the basic structure remain same जेमते कि हमें कोचे constitution रो basic structure that would be remain same ये same रहबो बाकी other हमें कहबे varieties and the variables they would be added later on बा हमें कहबे time अनुसार सेटा evolve ही जाइछि है ना तो ये सेंटेंस को लिखि परबो that is time and space that evolved the Indian temple architecture the Hindu temple architecture reflects the synthesis of art idea that is the ideas of that is the word dharma belief values and the way of life that is cherished under the Hinduism तले ये यहाँ पर गोटे मेंस रे क्वेश्चन ही परिबो आराम से इतरे किछि भी डाउट नहीं कि हिंदू आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ आर्ट आइडियाज धर्म बिलीफ वैल्यूज ये सब लिख है ना तो ताकू हमें गोटे एमती क्वेश्चन आसी पारे केमती क्वेश्चन आसले ताकू केमती हैंडल करिवो ऑब्वियसली हमें जेतरो कोचे लेट्स से कोचे हमें जेतरो टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया रे की ओडिसा रे को जदि मु कहबी पुरी टेम्पल कथा पुरी जगन्नाथ टेम्पल कथा नहीं जाओ तो पुरी जगन्नाथ टेम्पल रिफ्लेक्ट्स द आर्ट ऑफ ओडिसा ऑब्वियसली हमें कहबा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ ओडिसा खाली आर्ट एंड आर्किटेक्चर न जेमते हमें कोचे के जगन्नाथ धर्म है ना जब जगन्नाथ बिलीफ द जगन्नाथ कल्चर ताकू रिफ्लेक्ट करूची इटसेल्फ दैट रिफ्लेक्ट्स द जगन्नाथ कल्चर वैल्यूज रिफ्लेक्ट करूची वैल्यूज ऑफ गिविंग वैल्यूज ऑफ आमे कहबा कि जेमती पूरी टेम्पल रो जेमती इवॉल्व होची ओडिसी डांस कथा नै जो कि हमर जो फूड कथा नै जो जेते प्रकार हमर आइटम सब अछि है ना दैट इज ओडिसा क्विजीन ताकू भी हमें कहि परिबा वैल्यूज कहि परिबा एंड कोन आइडियाज कोन पूरी रो हमको जेते आइडियाज कोन आसुची डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट तो जेबो समस्त लिखि परिबो आर्ट आइडियाज कोन ना आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वर्ल्ड कथा नै जो दैट इज द जेमती लॉर्ड जगन्नाथ को जे ना कि दैट इज द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड है ना तो ये भी हमें कहि पारो जे कि प्रोटेक्ट करूची माने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करूची एमते किछि आइडियाज आसुची धर्म ऑब्वियसली सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करे बिलीफ भी हम कहि पारे कि दैट मीन जगन्नाथ को ऊपर वैल्यूज हम जोटा कहले कि जगन्नाथ कल्चर कथा नहीं परिबा तो ये सब रिफ्लेक्ट करूची एट द सेम टाइम रे जति हम देखो सोशल लाइफ मध्ये जगन्नाथ टेम्पल रिफ्लेक्ट करे कि सोशल लाइफ हमको जाना पड़ुची कि हां जो माने भी टेम्पल आर्किटेक्चर करजंती कि से टाइम रे कारीगर बा जो माने जो कारीगर माने थिले they were pretty skilled थिले and the king was also prosperous जदि king prosperous नथला त एते बड़ टेम्पल से केमिति कले तो and political stability भी थिला से इथरु जाना पड़ुची कि बिना political stability रे एते बड़ मंदिर तयारी करी हबो नाही तो दैट मींस हेतु हमकु एई भली आंसर लिखिया पड़िबो कि हां political stability was there financial stability was there skilled workers were there for the making of the temples
दैट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट डे, आम कहवा जो धर्म हो बिलीफ्स वैल्यूज ऑल दैट रिफ्लेक्ट करूची। तो ये गोटे पूरा मेंस क्वेश्चन ये सेंटेंस रो हेई परिबो ताको हम लिखियाबा है ना। एमिति भी आम कहवा द आर्ट्स जमती कि गोटे क्वेश्चन आसीथिला देखिबो तमे एसे रे लास्ट रे आसीथिला ओपीएस रे कि आर्ट फॉर द आर्ट और आर्ट फॉर द सोसाइटी कोन। तो ये भलिया मोर जहा मन पड़ुची तो ये भलिया क्वेश्चन को भी आम से लिखि परिबा आकु भी एग्जांपल देई परिबा जब यू। तो इन्फ्लुएंस by the early Buddhist structure such as like stupa तो जानते रॉक कट स्तूप सब थाए। The first Hindu temples were built from the rock cut caves कि जेते बले प्रथमे जाको हम कहबा कि इवोल्यूशन जदि हमें इवोल्यूशन ऑफ हिंदू टेम्पल देखिबा त कोनोसी भी टेम्पल आर्किटेक्चर मु खाली कहूनी कि हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर कोनोसी भी टेम्पल आर्किटेक्चर जो इवोल्यूशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द रॉक कट आर्किटेक्चर ही स्टार्ट होईची। जेमती केफ कथा नै जो केफ आर्किटेक्चर स्टार्ट हैला जेतरा हम कहबा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तांको टाइम रे फास्ट स्टार्ट हैला के केफ स्ट्रक्चर केफ रु आसला स्तूप देन आसला हमर स्तूप स्ट्रक्चर। तो धीरे 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 इंप्रूव होई आसला टेम्पल को देन टेम्पल ताले टेम्पल केमती हो जेमती रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर लाइक महाबलीपुरम जो हमर तमिलनाडु रो अछि महाबलीपुरम जोटा कि 2019 रे जो इनफॉर्मल समिट हेतला बिटवीन द जिन जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जदि मन थो समस्त 2019 कथा। तो सेमती महाबलीपुरम जोटा जहा को कहा जे के पंचरथ है तो जमती से गणेश रथ अच्छी पार्वती रथ अच्छी डिफरेंट रथ जा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आमे कहबा के रॉक कट सेमती आईहोल टेम्पल भी अच्छी तुम आईहोल रे दुर्गा टेम्पल अच्छी कर्नाटक रे। तो दीज आर द रॉक कट टेम्पल। तो के प्रथम रॉक कट को आम कारण से रॉक को काटिके टेम्पल करूथले। तो रॉक कट टेम्पल रु धीरे 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 आम आसला फ्री स्टैंडिंग टेम्पल को आसला जमती एबे लिंगराज है जो कि पूरी टेम्पल कोणार्क दीज आर द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल ये माने रॉक कट नुह कारण है रॉक कट कहले कौन सी जगह गोटे पहाड़ अच्छी से पहाड़ साइड को जमती आमर गुंफा सब होईची चाहे से हाथी गुंफा है जो चाहे से जो मतलब ऑल द केव्स दे आम केव्स आर कट द रॉक को काटिके केव्स करा जाईची। तो सेमती आम कहबा टेम्पल्स भी अर्लियर द अर्लीएस्ट टेम्पल्स वेयर द रॉक कट टेम्पल। तो ये प्रिलिम रे क्वेश्चन आसी पारे कि अर्लीएस्ट जो टेम्पल्स गुडा कोन थिला दे वर ऑब्वियसली द रॉक कट टेम्पल्स थिला। with the arrival of that means हम कहबा तापर गुप्ताज आसला 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी में देखिबा आर्किटेक्चर धीरे धीरे फ्री स्टैंडिंग दैट मींस एबी आसीबो कोन फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल। तो इनिशियली रॉक कट टेम्पल थिला देन धीरे धीरे फ्री स्टैंडिंग आसीबो जो थरे कि टावर रहिबो एंड प्रोजेक्टिंग निस है। ताले तुमको ये टेम्पल आर्किटेक्चर ऊपर हमर नॉलेज कुआडो आसुची दैट इज द शिल्प शास्त्र रो द आर्किटेक्चर प्रिंसिपल ऑफ द हिंदू टेम्पल in India is described in the शिल्प शास्त्र। ये भी प्रीलिम रे पचारि पारे है ना। दैट मीन्स द नॉलेज हमको मिलुची कोटू शिल्प शास्त्र रो आईडिया मिले कि व्हाट आर द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर कोन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर केमिति थ्रू द टाइम हाउ दैट थ्रू द टाइम एंड स्पेस दैट इवॉल्वड बाय इवोल्यूशन ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर हमें डिस्कस करिवा। जब यू द शिल्प शास्त्र मेंशन 3 मेन टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो ये जदि हम देखिए शिल्प शास्त्र अनुसार इंडिया रे जेते भी टेम्पल अछि तीन भाग रे हम ताको डिवाइड करिचे एक नगर स्टाइल और द नॉर्थ इंडियन स्टाइल दुई द्राविडियन स्टाइल और द साउथ इंडियन स्टाइल तीन रे होछि मिक्स स्टाइल जाको हम कहै वेसरा स्टाइल और द मिक्स स्टाइल क्लियर दीटा को मिसे कि आ गोटे स्टाइल हबो मिक्स। देन एमानकर पुनी सब क्लासिफिकेशन अछि सेमते नॉर्थ इंडिया को पुनी भाग हबो नॉर्थ इंडिया रे गुजरात टाइप हे जिवो बेंगल टाइप हे जिवो ओडिशा टाइप हे जिवो हिमाचल प्रदेश टाइप हे जिवो आसाम स्टाइल हे जिवो। तो ये पुनी तारो सब क्लासिफिकेशन अछि नॉर्थ इंडिया रो। सेमिति साउथ इंडिया रो चोला हे गला पांडियन हे गला द्राविडियन स्टाइल हे गला देन आसीबा हमर वेसरा स्टाइल है ना। तो एमिति आंकर वेसरा जोटा के मैं कहूचे ये भी गोटे कर्नाटक रे देखा जाए जोटा कर्नाटक रे खास करी बादामी वगैरह जो रीजन रे देखा जाए ताले आंकर पुनी सब क्लासिफिकेशन अछि। ये जो सब क्लासिफिकेशन आमे केवल नॉर्थ इंडिया रे पढिबा नॉर्थ इंडिया रो सब क्लासिफिकेशन द्राविडियन रो सब क्लासिफिकेशन एंड दिस विल बी द यूनिक वन। सो आज हमें केवल नॉर्थ इंडिया देखिबा। सो नगर स्टाइल जाको हमें कहूचे नॉर्थ इंडिया बा नगर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर आगे हमें फीचर देखिबा फीचर कोन। सो फीचर यदि हम देखबा दैट मींस नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो शिल्प शास्त्र रो हमको जाना जाए दैट इज नगर स्टाइल और द नॉर्थ इंडियन स्टाइल। ताले यार देखिबा हमें एक्सटेंशन बा हमें ज्योग्राफिकल एरिया यदि देखिबा बिटवीन द हिमालय एंड विंध्या ऑब्वियसली हिमालय तो समस्त जानि छन विंध्या
तो हिमालय विंध्या भितर कि अच्छे गैंगेटिक प्लेन दैट मीन्स पूरा होल गैंगेटिक प्लेन रे जो टेम्पल देखा जाए दे आर द पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है ना जोटा कि आम कहू प्योर नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर तुमको सर ओडिशा कौन आसुनी कि बिल्कुल आसूची ओडिशा बट ओडिशा होची तार सब क्लासिफिकेशन है ना जहाँ आम कहे सब डिविजन करें तार सब क्लासिफिकेशन रे ओडिशा बा उत्कल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आसो गुजरात आसो बेंगल आसो आसाम आसो हिमाचल प्रदेश आसो दे वुड बी सब टाइप्स आसो जहाँ भी हो तो ये थे आम नॉर्थ पार्ट में देखिए दैट इज जोग्राफिकली आम कह विंध्या टू नहीं कि हिमाचल भितर देख तो टेम्पल आम देखिए आम टेम्पल साधारणतः टेम्पल स्ट्रक्चर केमती थाए फॉर एग्जांपल जदि मु टेम्पल स्ट्रक्चर देखिबी दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ बेस्ट एंड आरो क्लाइमैक्स को आजे किए दैट इज आमे कहबा खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश जो एमपी रे अछि तमर जानचो खजुराहो टेम्पल जाको को आजे क्लाइमैक्स ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड दिस इमेज in the screen over the screen you can see this one also the image from the that is what खजुराहो टेम्पल है ना खजुराहो टेम्पल रो ये होची तमरो इमेज रो जोटा स्क्रीन रे होची वर्तमान देखुछ मध्य प्रदेश रे खजुराहो टेम्पल जाको कहा जे क्लाइमैक्स ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सेमती ओडिसा रे जदि हम देखिबा क्लाइमैक्स का को कहा जे पूरी जगन्नाथ टेम्पल को कहा जे क्लाइमैक्स ऑफ ओडिसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पूरी टेम्पल को कहा जे क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स कहले कहले कि हाईएस्ट लेवल जोटी पहुंची जाई कहले सैचुरेटेड टेम्पल आर्किटेक्चर तो सेमती पे नगर स्टाइल को हमें कहते से नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर गट सैचुरेटेड in form of Khajuraho temple Madhya Pradesh and the best example and that depicts the best example Nagar style होची खजुरा तो आर किछि हमें देखिबा दैट मींस नगर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर किछि हमें देखिबा जाको कोचे हमें तार कंपोनेंट्स हमें देखिबा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स तो कंपोनेंट्स होची जदि हमें बेस रुजिबा तो बेसमेंट जाको हम कोचे प्रथम बेसमेंट और अधिष्ठान अधिष्ठान ऑफ द बेसमेंट फास्ट रहबा कोन से भी टेम्पल को बेसमेंट थाए तमे देखो जे कोन फीचर और आमे कहबा दैट इज द एनाटॉमी ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फर्स्ट ऑफ कोन अधिष्ठान ऑफ बेसमेंट देन आसबो तमर व्हाट दैट इज जागति और रेज प्लेटफॉर्म हन रेज प्लेटफॉर्म रहबो दिस वुड बी द जागति रेज प्लेटफॉर्म एटा गोटे प्लेटफॉर्म हिसाब रे केना फ्लैट अछि सो इट वुड बी प्लेटफॉर्म देन आसबो प्रददक्षिणा ना प्रददक्षिणा पथ कहले जोथरे जो हमर स्पेक्टेटर्स माने बुली की चारिपटे बुलंती जेमति लिंगराज टेम्पल आमे गले चारिपटे बुलिकी देखुचे मंदिर दैट इज द प्रददक्षिणा देन आसबा हमर अर्ध मंडप ये सब गोटे गोटे मंडप ये सब गोटे गोटे हम कहबा मंडप ताली अर्ध मंडप देन आसबा मंडप देन महामंडप ताली ये हला अर्ध मंडप देन महामंडप एंड दिस वुड बी रहबो तमर शिखर आको हम कोन कहते शिखर ये द टॉलेस्ट टावर रही टॉलेस्ट टावर को कहा जाए शिखर है ना किंतु ओडिसा रे हमें आपको कोन कहते जगमोहन हमें आपको कहते जगमोहन एला तमरो नाट मंदिर एंड ये रहबो भोग मंडप जेटा ओडिसा रे हमरो करा जेछि ओडिसा रे डिफरेंट ना बट सेम स्टाइल यदि तुम पूरी जगन्नाथ टेम्पल को देखिबो हां टिके वेरिएशन होछि मु कहन कि मतलब जो फीचर कहले जेमति टावर 1 2 3 4 ए भी जगन्नाथ टेम्पल रे जेमति टावर 1 2 3 4 देखा जिवो ताले अर्ध मंडप मंडप महामंडप जाको हमें जगमोहन नाट्य मंदिर एंड भोग मंडप बोली कहूचे ओडिसा रे कहूचे एंड आको हमें कहूचे कोन शिखर ये हला तबर शिखर जोटा कि द टॉलेस्ट टावर इन द कॉम्प्लेक्स बा हमें कहबा पूरा जो प्रीमाइसेस रे टॉलेस्ट टावर रे बा पूरा द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल को कहा जाए शिखर तो ये देखा जो दैट ना शिखर ताले हमें देखो अर्ध मंडप मंडप महामंडप शिखर ना शिखर ऊपर छोटो छोटो टेम्पल देखि परबो दीज आर द स्मॉल टेम्पल अटैच्ड टू द हमें कहबा मेन और द मेन शिखर से मन को कह जे उरु शिखर और दे आर द लाइक द पैरासाइट तो ये माने छोट छोट टेम्पल्स आप रही छी दे आर द उरु शिखर देन जदि हमें देख शिखर एंड महामंडप जाको हमें कहते जगमोहन ओडिसा रे जाको है ना ये जो गैप रही छी दिस वी शेप गैप को कह जे अंतराल दिस गैप ए नैरो गैप थे वी शेप गैप है ना ताको कह जे अंतराल तो अंतराल होची कोन ना जोठी हमें सेपरेट होची दीटा टेम्पल दैट इज महामंडप एंड शिखर ये जो गैप ता कहूचे ए गैप को हमें कहूचे अंतराल दिस इज द गैप ऑफ अंतराल उरु शिखर कोन ना दैट इज द सब्सिडियरी और जाको हमें कहबा के लाइक पैरासाइट्स है ना ताको हमें कहबा ये शिखर गला देन शिखर ऊपर जो सर्कुलर बैंड रही सर्कुलर बैंड जेमति सब हमर ओडिसा रे टेम्पल रे देखै छै सर्कुलर बैंड यू कैन सी द डिस्क शेप रही जोटा कि तमरो डिस्क शेप रही गोटे बहुत बड़ देखियो दैट इज व्हाट आमलका देन ऊपर रहइबो
कलश तापर रहइबो तमरो छत्रिका देन आसबो छत्रिका जो बाना लगी था टेम्पल रे सेटा को छत्रिका तो पूरा टेम्पल रो जदि हम देखियो फीचर को तो फीचर को आउथरे मु रिपीट कर दोउची है ना तो फर्स्ट छत्रिका रहइबो तापर कलश रहइबो देन आमलका रहइबो है ना देन रहइबो तमरो शिखर ऑब्वियसली नो डाउट द टॉलेस्ट बिल्डिंग पूरा एटा रहइबो तमरो शिखर तो शिखर देन आसबो उरु शिखर अंतराल जो गैप मु कहली दीटा टेम्पल भितर जो गैप दिस गैप है ना देन आसबो महामंडप मंडप अर्धमंडप प्रदक्षिणा जागती and the raised platform adhisthana so these are the outer structure of the temple ये होची temple रो outer structure है ना ये होची temple रो कोन outer structure the temple रो जति हम देखिबा ए जो शिखर रहिची and this is the tallest tower of the temple premises or the temple complex हम कहबा तार ठीक particular में कहबा 90-degree angle रे there would be what garbhagriha where the what I would say the presiding deity resides here so garbhagriha kono the innermost chamber of the temple jaku kha je innermost chamber of the temple that would be in the vorticity of the kalasha जो कलश रही पूरा कलश vorticity रे रहिबो गर्भगृह जाको हम कहे innermost temple तो गर्भगृह को जीवा पहले you have to move like this जेमते हम पूरी टेम्पल रे जाउछे गर्भगृह जोठी जगन्नाथ बसंती है ना लॉर्ड जगन्नाथ जेमति कि अदरवाइज लिंगराज टेम्पल रे देखो जोठी लॉर्ड शिवा बसंती दैट वुड बी द गर्भगृह पूरा इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ द टेम्पल है ना तो सेठी से अछंती so this would be the I'm कहबे that is the internal structure the internal structure आउ कोन थाए small deities थांती जो माने कि द्वारपालिका जाको कहजे द्वारपालिका भी थांती जो माने गेट कीपर्स कहजे तो टेम्पल रे भीतर जदि हम देखिबा तो आउ कोन थाए ना नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर आउ गोटे कोन थाए कि हम देखिबा नंबर ऑफ हमको इमेजेस देखा जबो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस जो वॉल थाए से वॉल रे नंबर ऑफ इमेजेस देखा जबो मतलब बाहर भी भीतर भी बट इन ओडिसा कोन होवे ना हमरो जहां भी कार्य है जी ऑल दैट इज आई वुड से द डेकोरेशन और द मार्वल ऑफ द आर्किटेक्चरल आइडियाज and the skill that has been shown by the Odisha architecture or the Utkal karigars that is outside the temples that is not inside the temple is like the simple wall and does not have any kind of images encarved on that stone but where you can see in the North Indian temple architecture you can see both that is the outside the temple and inside the temple the images are encarved हम कहि परिबा in a decorated form okay तो ये गोटे थिला दैट इज द एनाटॉमी और आई वुड से द फीचर्स जोटा कि गर्भगृह कथा नहीं गेलो अधिष्ठान कथा नहीं जो जागती प्रदक्षिणा अर्ध मंडप मंडप महामंडप अंतराल गुरु शिखर शिखर अमलका कलश सो दीज आर द टेम्पल आर्किटेक्चर नगर टेम्पल आर्किटेक्चर जोटा कि प्राय तो सब टेम्पल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट हुए है ना तो तेणु करके देखिबा द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्ट अंडर द टॉलेस्ट tower as I was talking about a few minutes ago that on the vorticity of the colors or the amalaka there would be the location where the presiding deity resides in the innermost chamber okay so that would be the garbhagriha so these are the feature of nagara style of temple architecture है ना तो अनुकर की यदि हम देखिबा so here you can see the location once again हम आसीबा हमरो main point को के located जोटा कि रथकज को आजे ना the square temple with number of that is about graduated projection are the rathas कहले एमान को हमें गोटे रथ को ये गोटे रथ ये गोटे these are the rathas याको हमें गोटे रथ भी को तो साधारणतः यदि तुमको पचार कि ग्राउंड प्लान ऑफ द टेम्पल यदि केबे डिफिकल्ट क्वेश्चन एमती आसी पारे कि व्हाट आर द ग्राउंड प्लान ऑफ द टेम्पल ग्राउंड प्लान रे साधारणतः 3 5 7 थाए बट मैक्सिमम टेम्पल होची पंचरथ स्टाइल जाको कहजे ना पंचरथ स्टाइल पंचरथ does not means के 5 towers like 1 2 3 4 I would थियो 5 no पंचरथ means the segments of the temple सेथरे हम टेम्पल रो सेगमेंट को देखो जोटा जाको कहजे पागज जाको कहजे पागज ऑफ द टेम्पल सेटा मु डिस्कस करिबे आगो को कि पंचरथ कहले कोन बुझो त्रिरथ कोन सप्तरथ कोन यूजुअली वी डू हैव द that is what Pancharath style of temple architecture that the architecture to which ratha it would be included 3 5 7 that would be based on the ground plan of the temple architecture तो सेटा मु देखेबी परे तो को कंप्लीट कर देबा so the square temple हमें देखबा के number of that would be rathas the North India the common for the entire temple to be built on the stone platform with a step leading off
to it. That means obviously हमें 5 रहता है. Unlike the South Indian temple that does not have usual elaborated boundary walls, that does. And the gateways as well. Obviously तमे देखिबो हमरो North Indian temple architecture कौन से unlike the South Indian temple architecture, it does not have usually the elaborated wall. So this is also important feature of the North Indian and South Indian as well. हमरो जो North Indian temple architecture अछि ना, they don't have wall. Sorry, it would be having what आम कहबा कि जोटा कि आमर साधारणतः कौन थे साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर रे कोटी कोटी वाल तो मु कहबिनी एमती कि जो सेंटेंस लिखाई छी कि साउथ इंडियन टेम्पल डज नॉट यूजुअली हैव द एलाबोरेटेड बाउंड्री वाल कोठी कोठी देखा जाए बट बेसिकली जदि आम देखा बहुत रेयर देखा जाए वाल साउथ इंडिया रे कोन देखा जाए जो गेटवे जाको कह जाए गोपुरम नंदी वाटर टैंक दीज आर द इन जाको आम कहना कि inseparable feature of the South Indian temple architecture. The North Indian temple architecture हमको wall देखा जाए wall ऐसे देखा जाए because of what to give the protection to the temple from the plunders from the attackers because that आम कहबा ये सब थे and to safety आउ कोडा कि safety security temple जेमति कि हमर पूरी लिंगराज कथा नै जो ये सब temple रे बड़ बड़ wall कराई because that time the intruders used to plunder the temple को लुटू थिले सेथि पे बड़ बड़ wall करा जाउथला and wall ऊपर watch tower so that they can watch for the long distance, so that is why the temples wall वगैरह करा जाउथला जाबियो. The earliest temple had just one tower जाको हमें शिखर बोली कहउचे. Later धीरे धीरे several tower add हैला कि with the time as the time pass like this one used to be the प्रथमे then आपको then ये तापर तो evolution gradually evolution हैची and this is the climax. ये होची तमरो climax of a temple. ये गोटे temple रो climax picture. तो जेतरो temple architecture evolve होला प्रथमे शिखर हैला तापर आउ गोटे बस पूरा एकात्रे गोटे हमर कहबा जो highest level of जाको हमको जे climax रे पहुंचला. जेमति तमे ओडिसा रा evolution जदि हम देखबा 6 ओडिसा रा temple architecture started 6th century to नहीं कि 13th century में कहबा 13th century AD. तो ये जो टाइम ना ये टाइम को कहजी इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन ओडिसा. तो दैट मींस सेति पई जेतरो केही ओडिसा रे टेम्पल आर्किटेक्चर जाने पे चाहछो यू हैव टू मूव फ्रॉम द 6th century to 13th century जदि हम कहबा कोणार्क टेम्पल आर्किटेक्चर सो दैट तुमको टेम्पल रो इवोल्यूशन केमिति हेची सेटा जाना पड़िबो बा हम कहबा पुरी टेम्पल आज पुरी टेम्पल केमिति हैला कोन ऑल ऑफ ए सडन लोक पिक्चराइज करले केमिति पुरी टेम्पल होबो ना तो ग्रेजुअली सेटा डेवलप हेकी आज से क्लाइमैक्स रे पहुंची. तो सेमिति कि the figure before you this one is the climax of the North Indian temple architecture. तो जहारो हमें देखि परिबा जेमति गर्भगृह जगमोहन है ना गर्भगृह जगमोहन नाट मंदिर एंड भोग मंडप. सो दीज आर द डिफरेंट जाको हमें कहउचे ऑब्वियसली तमे जानछे जगमोहन ये सब हमको कहा जाए. हाँ तो हियर वुड बी मंडप महामंडप अर्ध मंडप दिस वुड बी देयर. तो भी हमें देखबा देयर आर डिवीजन है ना नगर हमें जोटा मु तुमको कहतली there are many division of the Nagar style of temple depending on the shape of the shikhara. This is very important again I repeat कि the division of temple architecture ना हमें केमिति करिचे जेमति एतो लिखाइ छै तमरो जेमति के देवगढ़ रो जो टेम्पल अछि दैट इज बट दशवतर और विष्णु नाथ कथा नै जो खजुराहो टेम्पल अछि लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो जगन्नाथ टेम्पल पुरी these are the example of Nagar style of temple architecture. एंड खास करे मुख्य तो दशवतर टेम्पल देवगढ़ है ना ये सबुठु अर्लीस्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल हम कहबा इंडिया रा तण करी ताको ना दियाइछि. तो जदि हम देखिबा कि सब डिवीजन केमिति करिছে कि केमिति हाउ दैट इज द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इट वाज डिवाइडेड into the sub types. Subdivision always the division depends on the शिखर स्टाइल के शिखर को प्रकार अछि जेमति कि here you can see the shikhara is different, here is the shikhara is different, here is the shikhara is different है ना. तो जहाँ को हमें कहबा कि रेखा स्टाइल जहाँ को हमें कहि परबा है ना लाटिना और रेखा है ना. तो this is a square temple हमें कहि पर square temple base and the wall curve or the sloping inward on the point ये तमे देखि परबो this one is the रेखा स्टाइल जहाँ को हमें कहै रेखा स्टाइल जेमति हमरो ओडिसा रे कहै कि रेखा देउଳ ना पीड़ा देउଳ खाकरा देउଳ. So these are like this. तो हमें सेमति देखि परिबा कि शिखरटा केमति हे परे vaulted हे परे that could be. तो शिखर हमें केबे डिफरेंट टाइप ऑफ शिखर हे परे जेमति फामसाना स्टाइल ऑफ शिखर
ये देखि पर शिखर केमती रही लाइक स्टेप रही स्टेप 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 से रही ये गोटे टाइप आसी जो देन से वल्लभी टाइप शिखर जोटा कि हम कहबा वॉल्टेड रूफ रही जमती ये जहाँ को हम ओडिसा रे कहूचे दैट इज व्हाट खाकरा स्टाइल है ना हमर जहाँ को हम कहूचे खाकरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन ओडिसा है ना तो ये डिफरेंट रीजन रे डिफरेंट ना रे जଣା जाए द रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विथ द रूफ राइज इनटू द वॉल्टेड चैम्बर जाको गोटे कहे बैरेल शेप रो भी आको कहे कि बैरेल शेप गोटे हमें बैरेल जो थाए ताकू जदि हमें काटी दवा मझिरु देन ताकू जदि ओल्टे की रखि दवा जो माने जाको कहे तो जो शेप ता डेवलप करियो दैट शेप जाको सेथ में कहे वॉल्टेड बैरेल शेप भी आको कहे टेम्पल को either it could be latina or the rekha style है function है or that is the pallava style है so that are the style is given or the name is derived from the by adjusting or by observing the shikharas of the different temples shikharas को देखि कि कह जाउची like this one is the step ये step है कि रही now this one is ये रहइबो कोन the slopey upward and the straight incline रहइबो straight incline এটা straight incline रही but here would be gradually incline रही gradual incline and does not have any steps a gradual incline रही so then आमे देखिबा now comes to the Odisha style of temple architecture तो ये थिला नगर style of temple architecture and तार important features जा थिला now we will come to the Odisha school of temple architecture तो ओडिशा होची गोटे वेरिएंट दैट इज हम कहबा कि सब टाइप ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये तो बुझा पड़ियो कि काहे कि याको सब टाइप कहे बिकॉज़ द टेम्पल आर्किटेक्चर विच डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडिया तार जो फीचर्स दे were what I would say incorporated into the temple architecture of Odisha. So Odisha is a variant of North Indian temple architecture or the Nagar style of temple architecture. Largely divided into three types that is the what रेखा देन जहाँ को आम कहे रेखा देउल पीढ़ा देउल एंड खाकरा देउल है ना तो जहाँ को आम रेखा देउल साधारणतः देउल कहले शिखर देउलर मीनिंग कौन शिखर है ना देउलर मीनिंग हूँ शिखर आमर ये शिखर न कहीकि ओडिशा रे कौन कहे देउल बोली कहुए तो ये तो समस्त को प्राय तो जना ना कि देउल दैट मीन्स द शिखर तो शिखर ऊपर क्लासिफिकेशन होता है that means आमर जो डिवीजन है जो ओडिशा रे टेम्पल आर्किटेक्चर that is divided on the basis of the style of शिखर or the type of शिखर को नहीं divide है so mostly हमें देखिबा the main temple sites are located in the ancient Kalinga the modern Puri districts हम कहि परिबा भुवनेश्वर ancient that is what त्रिभुवनेश्वर पुरी एंड कोणार्क तो ये जो हमें कहबा जाको कहउची हमर कोन ना the golden triangle है ना that means आमे कहबा कोणार्क पुरी एंड लिंगराज जाको हम कहते गोल्डन ट्रायंगल मध्ये कह जाए तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल ना एटा होची हमर पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर इवोल्यूशन एटी पूरा ओडिसा तो हमर जो टाइप होची जनरल टाइप होची रेखा पीढ़ा एंड खाकरा तो रेखा कहले देखैबा ताको हम गोटे गोटे देखै यार शिखर को कौन कहे देउल इन ओडिशा दैट मीन्स जो प्रकार शिखर से प्रकार ना दिए है ना द आमर ताले डिफरेंस कौन जदि हम कहबा कि डिफरेंस कौन तो डिफरेंस कौन मु कहबी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओडिशा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दो द ओडिशा इज ए वेरिएंट ऑफ द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बट ओडिशा रो यूनिकनेस अछि एमते नहीं कि ओडिशा रो यूनिकनेस नहीं आगे तो मुझे यूनिकनेस को जणाई दिए कि से तुमको जना पड़ कि यूनिकनेस कौन तो अच्छा ये ना ठीक अच्छे पर देखा है ना तो ओडिशा रे ये तुम दैट मीन्स जाको हम कहचे सो वर्टिकल ऑलमोस्ट आमर जो थाए जेमति कि फॉर एग्जांपल मु पूरी टेम्पल कथा कहबी किबा लिंगराज टेम्पल कथा कहबो कि दे आर पूरा एमति कह सुगर केन शेप रोच जाको मु कह सुगर केन शेप कहले पूरा स्ट्रेट शेप जो शिखर ना दे वुड बी वर्टिकल एंड स्ट्रेट बट जो नगर स्टाइल टिके ग्रेजुअल थाए तो जाको कह सुगर केन शेप सुगर केन शेप थाए तो ओडिशा रो जो टेम्पल जो शिखर रही दे आर वेरी स्ट्रेट इन नेचर एंड बाउंड्री वॉल थाए ऑब्वियसली हमें देखो हमारा बाउंड्री वॉल अच्छी as the temples were the target of the plunderers so जमती एथरे हमर वॉल देखा जाए मंडपस अछि ऑब्वियसली नो डाउट वॉल रहबो मंडप अछि देउल बा शिखर अछि एतो सब जानिछ कर्व स्टाइल जो थाए शार्पली इनवर्ड कर्व करूछि
Odisha style of temple architecture have the boundary walls अछि, the ground plan mainly हमें कहे always square थाए है ना। तो मस्तक तो हुए थाए मस्तक जोटा कि पूरा ऊपर थाए आमालका मस्तक ये सब आम रहिबो। दैट मीन्स सन टेम्पल कथा नहीं जाओ जेटा कि इटसेल्फ कोणार्क पुरी जगन्नाथ टेम्पल कथा नहीं जाओ लिंगराज टेम्पल कथा नहीं जाओ दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओडिशा टेम्पल स्टाइल। तो ये रहबो ओडिशा। बाकी एमती नहीं कि ओडिशा इथरे सरी गले ओडिशा को हम गोटे गोटे डेप्थ रे देखिबा। आज खाली हम देखुचे सब क्लासिफिकेशन जेम खजुराहो स्कूल हम देखिबा। खजुराहो स्कूल कले मध्य प्रदेश रे एंड यूनेस्को हेरिटेज साइट 10th century the temples are belongs to the 10th century and the world heritage site as well. Chandela dynasty taku jodi हम देखबा that was Chandela dynasty they made this one or that was the built during the time of Chandela dynasty. Sandstone रही कारण मध्य प्रदेश रे विंध्या रेंज अछि और विंध्या रे तुम जानछो that is what विंध्या रेंज is known for the sandstone. तो टेम्पल जो होची साधारणतः sandstone but एठी हम गोटे जिंस कहबी कि maximum temples are made in what that is the what हम कहबा sandstone maximum almost 99% of the temple made of sandstone almost 99% because sandstone एथिपे यूज करा जाय they are soft in nature as they are soft so कारीगर बा आमे कहबा जो एनकाफ बा ताकू कार्फ करिबा इजी rather than the granite and granite ताकू एनकाफ करियबनी से भांगी जीवो तेणु करके सबले सैंडस्टोन को प्रिफर करा जाए और इट वुड बी आमे कहबा के बहुत स्ट्रांग लाइमस्टोन को भी तमे नहीं पारो। तो बेसिकली सैंडस्टोन इज वाइडली स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया दैट इज व्हाई सैंडस्टोन इज द मोस्ट प्रिफरेबल स्टोन ताको हम कहि परिबा है ना। तेणु करके सैंडस्टोन रे हिते टेंपल सब चाहे से तमे कोणार्क टेंपल कथा नियो चाहे से लिंगराज कथा नियो जेते भी टेंपल ओडिसा रे अछि दे ऑल आर द मेड ऑफ सैंडस्टोन बिकॉज़ जोटा मु कहली सॉफ्ट नेचर थाए इजीली अवेलेबल अछि देन ताकू जल्दी हमें करि पारे और से ताथरे फाटिबो नाही बाकी अदरवाइज से क्रैक ही जो। द लार्जेस्ट टेंपल खजुरा टेंपल इज द व्हाट दैट इज व्हाट कांदारिया महादेव टेंपल व्हिच attributed to the king गंडा है ना। तो ये चंदेला डायनेस्टी दैट मींस को डायनेस्टी एमती क्वेश्चन भी प्रीलिम रे आसी पारे कि को डायनेस्टी कहथले चंदेला डायनेस्टी। स्टोन मु तो कहली काहे कि ये स्टोन यूज करा जे तार लॉजिक के प्रॉक्सिमिटी रे देखा जाए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था ज्योग्राफिकल एरियाज रे and soft the nature of the stone and also to carry out the जो artistic art that would be easy that is why. Then Lakshman temple dedicated to the Vishnu was built by the Chandela king Dhana that is what Dhanga sorry Dhanga so that is Dhanga. So these are the temples are found in Khajuraho. तो Khajuraho रे जदि हम देखिबा that is what Kandaria Mahadev temple then Lakshman temple. These are the important temples patronized. These were patronized by Chandela dynasty and UNESCO heritage site रे आसुची खजुराहो जो and that is like the king that is what गंडा हेगला कि बा धांगा हेगला they obviously जेते बड़ राजा सेते बड़ टेम्पल है ना। ये तो जान जकने राजा जेते स्ट्रांग हबो लाइक फॉर एग्जांपल अकबर कथा नहीं जाओ तांको से बहुत स्ट्रांग थिले बोली एते बड़ बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बा आर्किटेक्चर करि परथले सेमती तमरो जेते भी एटा होची प्रॉस्पेरिटी रो साइंस के है ना किए केते बड़ टेम्पल करि परछे दैट मींस से राजा सेते प्रॉस्परस सेते डोमिनेंट so that was also one type of like that. The temples had the three chambers हम कहि परबा है ना जो थर की एतले कहै छी एटा चाबर से जाई छी जाबियो the गर्भगृह मंडप and अर्ध मंडप all the towers that is the Sikara's temple rise high upward in a curved pyramidal fashion emphasizing the temple's vertical thrust ending in the horizontal fluted disc called the amalaka. Amalaka shape रो already बुझाई देछि ता टॉप रे अछि कि कलश है ना एरोबे the crowning element of the कलश and amalaka to be founded on the all Nagara temple style देखो कना सबले टेंपल ऊपर जो क्राउनिंग था ना अमलका ऊपर कोन थे अमलका एंड कलश सब टेंपल रे देखो कलश थिबा पक्का। खजुरा temples are known to be the extensive erotic sculptures images बहुत सारा images देखा जो like the कोणार्क they are extensive erotic sculpture of the images आज देखा जाए तो ये खजुरा टेंपल ऊपर हमें गोटी देखले खजुरा रे को टेंपल अछि तो एटा लिखि परबो खजुरा टेंपल जाको कुआ जाय तो the stronghold of the North Indian temple architecture the आउ ताको कहि परिबा the symbol of the North Indian architecture the climax of North Indian architecture that is the Khajura temple architecture which comprises that is the number of infrastructure that is what temple architecture is there but the Kandaria Mahadev the Lakshman temples they are the what the most significant temples dedicated to the Mahadev
and the Vishnu as well, patronized by the Chandala dynasty. Then ko thre tiar hichi, ko century 10th century. These are the things you have to need to write. And the feature jemti mandapo, ardha mandapo, garbhagriha, climax to obviously sabu rahibo. Then Khajuraho sculptures are highly stylized with the typical feature के बहुत ही ज़्यादा stylized रही थी. Temples were generally north to east facing जैसे हमें देखा temple कौन सी north to east facing temples. पंचायतन स्टाइल बात आपको कहा जाए पंचायतन स्टाइल भी कहा जाए पंचायत है ना द टेम्पल मेकिंग वाज फॉलोड. पंचायत स्टाइल के लिए पंचरथ है ना पंचरथ पंचायतन स्टाइल के लिए पंचरथ तुम कैसे पंचरथ कौन कहले पंचरथ मु गोटे ग्राउंड प्लान ड्रॉ करूची कौन से गोटे टेम्पल रो सो दैट तुम बुझी परियो पंचरथ कहले कौन. पंचरथ कहले कौन ना 5 सेगमेंट ऑफ द टेम्पल 5 सेगमेंट कहले लेट्स से कौन से एंगल रु जदी हम देखबा हमको पांचटा सेगमेंट देखा फर्स्ट से एटा एटा हला हमर वेस्ट नै गेले 1 2 3 4 5 तो एथे जणा पडुनी बोथे साइड आउट टिके मु ड्रॉ कर दउ भल से लेट्स से दिस वन ये गोटे रहला तो सेमिति ओके सो दिस वुड बी जदि जने एई पटो देखिबो ना तो के पांचटा देखा जइबो 1 2 3 4 5 तो जदि तुम वेस्ट रु देखिबो 1 2 3 4 5 तो ए एति की तुमको देखा जइबो साउथ रु देखले एति की देखा जइबो तो जो पटो देखले तुमको पांचटा सेगमेंट देखा जाको कहे पंचुक दैट इज द बट जाको कहे पंचायतन स्टाइल बा पंचरथ स्टाइल बोली कहा जाय है ना. तो ऑब्वियसली जेतरे मु तुमको लिंगराज पढेबी बा पूरी पढेबी ग्राउंड प्लान पढेबी सेtra आउट के क्लैरिटी बढ़ी जिवो कने से इमेज ता देखले क्लैरिटी बढ़िबो. तो आज त हम इंट्रोडक्शन क्लास नउचे सो नॉर्थ इंडिया रो सो दैट हमको गोटे आईडिया आसी जो कि पूरी जगन्नाथ टेंपल के केमती हेची. There are many temples at Khajuraho, the most dedicated one the Hindu gods. Sadhanata, mostly dedicated, most of them are dedicated to the Hindu gods. Like some Jain temples are there. This is also very important question कि समझते पड़ते exam रहे कि whether the Khajuraho is dedicated only to the Hindu gods or does it have some other religion faith also available. Obviously सेठी तुमको Buddhism, Jainism, Hinduism सब देखा जैसे कि so that is the climax. हमें कहबा in terms of religion and in terms of art and architecture as well. 64 Jogini temple तुमको बैठी देखा जो as well as some Jain temples like as well as the what that is what Chosun Yogini temple also there. जो Chosun Yogini temple of a small square shrine dedicated to the erotic devi or the goddess associated with the tantric worship after the 7th century. The number of amekeba temples अछि that is amekeba some Jain temples अछि amekeba Hindu temples and Buddhism as well. Kana stupa अछि सेठी तो obviously amekeba stupa भी रही तन करके एठी सेही जो रीजन को amekeba के जो खजुराहो रीजन रे बोथ अछि के हिंदूज भी अछि बुद्धिस्ट भी अछि जैन भी अछि. Here you can see the Khajuraho temple the image जोटा कि already में देखि सरी छे. So image is like the east facing रही temple is east facing temple and the Garbhagriha would be the innermost. Here would be the Garbhagriha, the temple in the vorticity of ये रहिबो. Then आमे already पढ़िथिले कि कलश पूरा टॉप रहिबो कलश देन अमलका जोटा डिस्क शेप रो रही जो राउंडेड शेप रो देखि परिबो जाको हम डिस्क शेप को अमलका and the tallest building रहिबो तमरो शिखर ये रहिबो तमरो शिखर जो टावर ये ला शिखर शिखर ऊपर ये जो छोट छोट टेंपल तुम देखि परिबो एमन को कहे उरु शिखर और द सब्सिडियरी श्राइन्स सॉरी शिखर जाको कहे then this gap ये जो gap अछि this gap को कहे अंतराल तापर से तोर महामंडप the great wall then mandapa the wall and the ardha mandapa the entrance perch or the entrance it entry करके gradually you will move to the innermost chamber where the deities reside the presiding deity of the temple resides. So these are the architecture. Apart from that you are having a what I would say the raised platform जाको raised platform and the pradakshina as well. Pradakshina इठी तमर temple बुली परियो pradakshina also there and this would be the jagati the raised platform this platform a raised platform है ना. Now comes to the Solanki school. Solanki school जोटा मु कहतली हमें टिके variation देखुचे different type Solanki schools कोठी देखाउचे गुजरात मु तुम कहतली that means these are the subdivision हमें देखि देखि जाउचे ओडिसा देखिले
जब ओडिशा देखला पर आम आसवा ए सोलांकी स्कूल गुजरात रे भी किसी टेम्पल आर्किटेक्चर देखा जे दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सब टाइप रे आसीबो एक मिनट सब टाइप रे आसो गुजरात and Rajasthan region रे so these schools developed under the patronage of Solanki rulers in Gujarat तो गुजरात रो तुमको पता है गुजरात टेम्पल आर्किटेक्चर so that would be the northwestern part of India including the Gujarat and Rajasthan Solanki rulers मन तक patronage को थे the stones to build the temple ranges in color and type the different colors रो यूज कराई छी while the sandstone is the commonest मैं तुमको already कह दी कि 99% of the Indian temples they are made of the sandstone because they are मैं कह दी कौन पाई nature a grey and black basalt can be seen in 10th century or to the 12th century sculpture as well एटा स्कल्पचर लिखा है स्टोन मतलब टेम्पल लिखा है स्कल्पचर तमे करि परिबो स्कल्पचर लेट्स से गोटे मूर्ति हमें करू छे कोन से दैट कैन बी डन थ्रू द व्हाट आई वुड से द basalt or other but making the temple through this it would be difficult the most exuberant and the framed are the manipulatable soft white marble ये भी यूज करा जाय छी काना राजस्थान वगैरह मार्बल मिले which is also seen in the 10th century to the 12th century Jain temple Mount Abu रे तमने जानछो ऑलरेडी टेम्पल अछि है ना जेटा कि बट रतनपुर माउंट एबू एम के माउंट आबू कथा नहीं देन 15th century temple रतनपुर कथा नहीं जाओ so these are the some of the temple architecture example of the Solanki school हम कहि पारे other north western part of temple architecture में कहि परिबा The Garbhagriha is connected with the mandapa both that is the internally as well as the externally ये तो मतलब इंटरकनेक्टेड था गैप साधारणतः एते वाइड गैप न था दे आर इंटरकनेक्टेड था जो आमे जेमति देखबा एठी के गैप थाए तो एमति गैप न था एटा हमको जाना पडुनी एमति गैप अछि कि नै तो एठी गोटे ए साइड ऑफ पडिछि बोली हमको जाना पडनी ते बटे गैप थाए प्लेटफॉर्म सेम रहइबो बस गोटे ट्रांजिशन थाए तो कम कहै The unique feature of the school's presence that is the step tank. ये देखी परियो step tank, है ना? Known as the what Surya Kund. In the proximity of the temple. Temple रो proximity देखो पूरा गोटे tank रही छी. आउ ये फोटो unique temple तमे देखी परियो. For example, the Sun Temple Modhera Gujarat. Sun Temple Modhera Gujarat एतो समस्त जानि छो. ना पछारे UPSC केतेटा Sun Temple अछि इंडिया रे. हम है ना? ये क्वेश्चन पछारे समति तो हिमाचल प्रदेश रे भी अछि. The temple dated back to the 11th century was built by the Raja Bhimdev I of the Solanki dynasty. ये जदि हमें टेम्पल को देखिबा है ना जोटा कि हमें केवल सन टेम्पल्स कथा कहले कि 100 ऑफ स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर पॉइंट रही छी है ना बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट थाए कारण ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ द वाटर एंड द वाटर स्कार्सिटी से रीजन रे देखा जाय सेति पे से माने पॉइंट करूचंती perhaps that is the grandest temple tank in India में कहि परिबा hundreds of square meter rectangular pond रही तो बड़ pond बोली भी कहा जाए तो आपको तमे these are the Solanki temple architecture में देखो छे तो Solanki temple architecture में Sun temple Gujarat Modhera भी देखि परिबो then as well Dravidian style of temple architecture or that is the South Indian style of temple architecture तो Dravidian has for South India or we will say the South Indian temple architecture 9 to 12th century AD रे evolve होइछि throughout the Chola Empire पूरा में केवल Chola Empire टाइप रही थी तो Chola है जो कि Pandyan Dravidian ये टाइम रे तो unlike आंको भीतर difference difference तो मु आगे एठी देखे देखे difference कोन तापर then we will go through the slide difference होजी कोन first आंकर जो शिखर जाको कहते विमान हमें जाको शिखर कहउथिले ना here it would be called as the विमान माने North Indian रे this main infrastructure the main tower of the building it was called like शिखर here it would be called as the विमान then Colossus empty as usual there would be Colossus the Colossus would be there is no doubt but the point is that here would be mandapa would be open that is the uniqueness of the South Indian temple architecture is that mandapa is just a raised platform does not have like matlab number of hame कहबा कि like mahamandapa mandapa ardha mandapa these would be not there or like Odisha रे में जाको कोचे जगवान नाट मंदिर and भोग मंडप ये रहिबो नाही there would be have only one standing tall building that is in form of vimana then you will have the open mandapa is there open mandapa where like the what जेमति तमर को आजे ना कि भारत नाट्यम
that evolved from this mandap bharatanatyam जेमती हमर ओडिसी नृत्य ये सब मंडप रु इवॉल्व होइछि and obviously गर्भगृह जेमती थिला as usual गर्भगृह would be verticity of the शिखर पूरा verticity रे गर्भगृह रहइबो बट आंकर कोन गोटिए स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो जोटा हम कहबा then you will have gopuram the gate are such a huge gigantic थाए साधारणतः हम देखे the gates are gigantic बहुत ही colossal थाए or I would say that would be the colossal shape रो थाए gate गुड़ा then we will have a pura then here would be nandi रहिबो nandi then raised platform जाको हम मंडप कहबा तो once again जदि हम देखिबा फास्ट जेतरा तम एंट्री मारिबो जाको गोपुरम बा गेट कहाजे गेट साधारणतः बहुत बड़ा हिते जाइगेंटिक हिते कलोजाल हिते देन तमे गेट रो एंट्री करके आसीबो देन यू विल हैव स्टेप रे आसी हमको मंडप ऊपर को आसीबो जोटा कि गोटे सिंपल फ्लैट प्लेटफॉर्म रेज प्लेटफॉर्म देन यू विल कम टू द मेन टेंपल जाको हम कहबा गर्भगृह बा जस्ट श्राइन्स जोटी रहउछंती अत डेटी रहउछंती एंड हियर वुड बी द विमान ए विमान रहिबो एंड ऑब्वियसली जो शिखरटा रहिबो शिखर रे कलश भी रहिबो ताली ये रहबो यूनिकनेस प्लस डज नॉट हैव वॉल तो रहबनी एठी कोन रहबो टैंक रहबो वाटर टैंक रहबो हाना बट नगर स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर में देखितले कि वॉल थाए हाना सेथरे महामंडप मंडप अर्ध मंडप ए सब थाए ए तुमको देखाजबो नाही त बेसिक डिफरेंस हम देखुचे बेसिक डिफरेंस रे आउ कोन रहबो ये टेंपल केमते अछि दैट इज स्टेप है कि टेंपल अछि बट हमर एमते स्टेप न थाए हियर इन नॉर्थ इंडिया देखो इट वुड बी curvilinear it would be like shape would be like this the shape of the temple would be like this okay then it would be temple shape would be like this but here the temple is looking like a step pyramidal shape okay so that is also the basic difference between the two temple architecture and साधारणतः ये साउथ इंडिया रे देखा जाए तो ये रहबो बेसिक टेंपल आर्किटेक्चर मो जोटा कहली के बेसिक डिफरेंस कोन of the two temple architecture south and north now we will come to the Dravidian school hame dekhiba so obviously the unlike the Nagara temple type temple enclosed with the compound wall hame dekhiba ke ethi tamko Dravidian re dekhajbo nahi the front wall has an entrance gateway जाको हमें कहा गोपुरम जोटा मु कहली कि गेटवे जोटा कि कलोजाल थाए that would be a huge one रहिबो then water tank रहिबो मु तुम कहथली obviously temple will have the water tank रहिबो विमान रहिबो pyramidal step बा step pyramid जाको कहा जे मु तुम कहली step एक रहबो geometrical rather than the curvilinear बा north india जेमते शिखर रहिछि curve है कि थाए सेते curvilinear रहिबो नाही in south indian temple architecture the word shikhara is used only for the crowning head जाको हमें कहला अमालका जेमते हमें नॉर्थ इंडिया रे कोन कहू अमालका ऊपर रहबे कलश ऊपर रहबे छत्रिका जाको हम कहू बाना टेंपल रो तो सेमिति ई पार्ट टाकू से माने कोन कहउछंती दैट वुड बी शिखर कहउछन से पार्ट टाकू कहू जो क्राउनिंग हेड टाकू कहउछंती शिखर है ना कलश थाए अमालका थाए ऑब्वियसली हमें पढ़िछ अमालका जो डिस्क शेप रे थाए इट इज कॉमन फाइंड ए लार्ज वाटर रिजर्वायर थाए टेंपल टैंक वाटर रिजर्वायर enclosed within the complex रो भितरे थाए गोटे वाटर थाए subsidiary shrines are either incorporated with the main temple or located as distinct and separated small shrines beside the main temple छोट छोट टेंपल थाई परे लाइक पूरी जगन्नाथ टेंपल भितरे बहुत छोट छोट टेंपल अछि लक्ष्मी टेंपल अछि हमको छोट छोट टेंपल अछि सेमति लिंगराज रे भी देखो छोट छोट टेंपल रहिछि सो दीज आर द सेपरेट टेंपल्स ये स्ट्रक्चर हमें देखि दैछे लाइक गर्भगृह अछि पददक्षिणा रहबो दिस वुड बी द पददक्षिणा ऑब्वियसली नो डाउट here would be the pradakshina and as we were also talking about that is what pradakshina garbhagriha bhimana कथा हम डिस्कस कर चलचे obviously platform तो रहिबो platform that is raised platform जाउ को कोचे है मंडप ओपन रहिबो here would be हम कहबा open रहिबो जोटा कि so there are also multiples that is what story called vimana the built above the garbhagriha upar rahichi the pillars and pilasters are massively used for this architectural style the circular that is the what passageway or I would say passageway around the garbhagriha the chief deity's room to permit the deities to have the pradakshina coming in the circulars they will have a look of the temple the entire structure was encircled with the courtyard surrounded by the high walls koti thai pare koti not thai pare setere semti kichi nahi like the Meenakshi temple Madurai like Tanjore temple
Brihadeshwar Tanjore temple, the most colossal temple of India, the largest temple of India and the highest temple of India. Then Mahabalipuram temple, Sur temple, जोटा आउटे पूर्व होती Mahabalipuram Sur temple तमिलनाडु को था. So then आसो हमें भेसरा स्टाइल. Then भेस ये तो रहबो हमर तीनटा स्टाइल हमको देखियार थिला. गोटे रहउची नॉर्थ इंडिया, गोटे ला साउथ इंडिया रे दीटा है ना. तो लास्ट टाइम देखिबा भेसरा. तापर हमें केवल उत्कल हमें खाली पड़ियो. भेसरा स्टाइल के लिए मिक्स बा डेकान टेंपल स्टाइल आको कहा जाय. खास करी कर्नाटक रे देखा जाय. ये होची हाइब्रिड, that is what hybridized. That means the both Nagara style and Dravidian style ro mixed जो temple architecture होची ताको कहा जाय डेकान style of temple architecture और भेसरा style of temple architecture बोली कहा जाय. And obviously ये गोटे ट्रांजिशन एरिया रे अछि 7th सेंचुरी देखिबा. ट्रांजिशन एरिया कहले इंडिया मैप को जदि तमे देखिबो, इंडिया मैप दिस वुड बी नॉर्दर्न स्टाइल, ए रेबो साउदर्न स्टाइल, मझिरे जोटा रेबो दैट इज द भेसरा स्टाइल. मिक्सचर ऑफ बोथ टेंपल आर्किटेक्चर, मिक्सचर रेबो भेसरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर कर्नाटक, दैट टू बी द नॉर्दर्न कर्नाटक, कृष्णा रिवर एंड विंध्या ए भितरे. The Vesara style of temple architecture is related to the region between the Krishna and Vindhya. So हमके medieval time रे evolve होइतला जाको कहे Vesara style of temple architecture, and does not have any independent origin of its own and said to be the outgrown of the Dravidian style with the incorporation of the some of the feature from the North Indian or the Nagara style as well. The Vesara style temple architecture popular after the 7th century. 7th century कारण by 5th century हमें कहबा नॉर्थ स्टाइल रे हमें नॉर्थ क्लाइमैक्स को आसी जाइतला 5th century and 6th century. देन ये स्टाइल हैला यार इवॉल्व हैला. तो खास कर ये कोठी देखा जाए वेसरा स्टाइल ओरिजिनेटेड इन द कर्नाटक रे देखा जाए. जमती चालुक्य डायनेस्टी, द बेस्ट एग्जांपल इट वाज स्टार्टेड बाय द चालुक्य डायनेस्टी एंड द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी. Therefore, it is also known as the Chalukya style of Karnataka style of temple architecture or Karnataka style of temple. Either you can say Vesara, you can say mixed, you can say Chalukya of or Badami जोटा मैं तुमको initial classes रे वो यूज करती है. Badami style भी कहा जाए, Karnataka style भी कहा जाए, and it was further that is improvised by the what Rashtrakuta and Hoysala dynasties as well. The height of these temples were that is what reduced compared to its Nagara and the Dravidian counterparts. The height of the temple's towers over the sanctums is usually shorter than the Vimana of the Dravidian style. कि temple जो हमें कहे जो शिखर जाको हमें कोचे ताहरो हाइट टा टिके कम ग्रेजुअली हम देखबा. पिरामिडिकल इन प्रोफाइल रहबो. एथरे कोन मिनिएचर विमान देखा जाए. मिनिएचर कहले बहुत सारा छोट 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 विमान हमको देखा जाए. देखो नॉर्थ इंडिया रे हम कोचे शिखर, साउथ इंडिया रे कोचे विमान. तो सेमती मिनिएचर रहइबो बहुत गुडा हेई पारे, छोटो हेई पारे है ना. द शेप ऑफ दिस टावर कुड बी पिरामिडिकल इन प्रोफाइल रहइबो. तो फॉर एग्जांपल बादामी टेंपल, दुर्गा टेंपल आईहोल, देन विरूपाक्षा टेंपल and that is the case of temple that is what Somnathpur. So these are the some temples रे example दिए जी. खास करी main temple रहे दुर्गा टेंपल आईहोल जार origin and one of the oldest stone जाको rock cut architecture विल बादामी टेंपल. Then that is विरूपाक्षा टेंपल and that is केशव टेंपल. These are the example हमें कहि परिबा. एटा देखि परिबो. This is the mixture. ये केमती mixture है जी. Now this temple को ये देखा तुमको सर एटा कौन जो ये हला दुर्गा टेंपल एंड दिस इज अ रॉक कट टेंपल आर्किटेक्चर. ये गोटे रॉक कट टेंपल आर्किटेक्चर. आर फीचर कोन ये जो टॉप टा ना, टॉप टा होची नगर स्टाइल. दिस वन इज नगर स्टाइल एंड द बॉटम पोर्शन, दिस पोर्शन इज व्हाट द्रविडियन स्टाइल. दैट मींस हम कहबो साउदर्न स्टाइल. तनु ये हे गेला गोटे मिक्स्ड हे गेला. ये मिक्स्ड कारण ये जो वॉल होची ना, ये वॉल हमरो नॉर्थ इंडिया रे वॉल न थाए. नॉर्थ इंडिया रे एमिति सॉरी पिलर, सॉरी इट वुड बी पिलर्स. The pillars are not present in North India. Pillars केवल South India रे देखा जाए. तो ये जो pillar structure ये South India रो निया जाइची. And ऊपर टा जदि हम देखो एटा तो broken हे जाइची. Now this one is the North Indian style. So overall the temple is a mixed between the two style रो हमें mixture रे करा जाइची. Like this one you can see. ये देखो ये होची नगर style temple ना ऊपर टा किंतु तळटा हेची कोन द्रविडियन style रे निया आइची. So this is also Vesara style. ये के mixture ना ये भी गोटे mixture हमें कहि परबा. तेणुक बादामी टेंपल कथा नहीं पार. रॉककट ये देखिपर. दैट इज द रॉककट टेंपल आर्किटेक्चर. हियर इज द रॉक, बड़ बड़ रॉक अच्छी से काटिक कहुई. देन विश्वरूप दैट इज बट विरूपाक्षा टेंपल है ना, दैट इज पटाकल एंड दुर्गा टेंपल आईहोल. सो दीज आर द एग्जांपल्स. सो तुमको कहे वेसरा स्टाइल रे कोन आसबो. ओबवियसली तुम लिखो कि वेसरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर व्हिच डेवलप आफ्टर द 7th century
in the Karnataka, northern Karnataka and the Maharashtra region or the Deccan region, that was a mixture of the both North Indian and South Indian. As the South Indian and North Indian temple architecture, they got saturated or they attained the climax. Now this temple architecture diffused into the other parts of the interior region of the country in form of Aiol or the Badami Karnataka, जो Chalukyas माने रहते जो आम कह Badami dynasty जो रूल करते. So this is all about आम कहले three major temple style रो आम देखिले. Then ओडिशा आम काली देखिबा कि ओडिशा रे जो आमर पर्टिकुलर ओडिशा को आम फोकस करबा काली. बाकी रीजनली मु एते माने सब डिवीजन करूनी कना बहुत हेक्टिक हे जो तम ताकू आम परे जेते